have done the infectious part, and then we can have some discussion related to the general general features of the liver disease. That is why I have slightly changed the sequence. So, histology or anatomy. This is the liver structure is basically hepatic lobule, hepatic acinus, central lobule. Rather than going through these are the different terms will be go through to the when we are doing liver, but just do it on the diagram. Okay. So basically, when we take this hexagon structure, is called SNS. The sub part is called SNS. Okay, this part is SNS. So when we say lobule, what in the lobule is? This central part is a central vein. Okay, and what these are the hepatocytes, which is called the parenchyma of the liver. Then as we move to the periphery, then we have three structures which we have in the portal tract, that is portal vein, hepatic artery, and bile duct. Sorry. So we'll go through these two diagrams again. Then when we move over here, start from peridia and then the inflammation extend into the parenchyma. ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि इंटरफेस हेपेटाइटिस. ठीक है, हम इंटरफेस हेपेटाइटिस की टर्म यूज करते हैं जब यूजुअली पोर्टल प्लेट डैमेज हो जाती है. Okay, so basically coming to the topic, which is viral hepatitis. I just want to say that liver is respiration, head and neck, even orthopedics of fourth year. Liver is most difficult part, the most difficult part of the pathology, which is difficult. Okay, so viral, when we say viral hepatitis, there are a number of the viruses which have affect the liver, and but there's a term which is called hepatotropic viruses. Okay, you guys able to appreciate this is hepatotropic virus. Okay, the hepatotropic viruses are those which usually affect only liver of infections, which can cause hepatitis. That is inflammation of the inflammation of the liver. But there are few infections, but along with the part of the body, like yellow fever, like cytomegalovirus infection, like infectious organs like gastrointestinal tract, like head and neck, like throat. But when we say these also affect the liver and can cause infectious hepatitis, but when we use the term hepatotropic viruses, the hepatotropic viruses like A, B, C, D, E, these hepatotropism for liver means preference for liver. They primarily affect the liver. We need to know that this hepatitis is a global problem, and hepatitis, these infection causes acute hepatitis. Acute hepatitis, although we will be doing that individually, all of them have a capacity to cause acute hepatitis, chronic hepatitis, fulminant hepatitis, and carrier state. And I'm just telling you that the basic take messages that at the end of the lecture, at least you should be able to understand which hepatitis have a capacity to cross chronic hepatitis and carrier state. So basically, then we will know the importance of these viruses. Okay.
So the majority of the viruses can be asymptomatic. Like we are nowadays talking a lot about the coronavirus. There are a lot of the asymptomatic carriers. The same is true for hepatitis. There are a lot of the people who are simply the asymptomatic carriers. And as in the coronavirus, when we come across that there in some areas there is a population of 70 to 75% of the people who are simply asymptomatic carriers. The same is true for hepatitis. Although the percentages are not same, but there are many asymptomatic, yeah, many of them can be asymptomatic viruses. ठीक है, कोई भी liver disease होती है तो patient किन symptoms के साथ present करता है? Patient present करता है nausea के साथ, anorexia के साथ, vomiting के साथ, right upper quadrant pain के साथ. Right upper quadrant pain क्यों होगा? क्योंकि right upper quadrant liver की location body में कहाँ पे है? On the right side. So that is whenever there is a pain, it will be on the right upper quadrant. और अगर हम उसका labs भिजवाएंगे तो हमें क्या चीज रेज मिलेगी? AST or AST, that is AST and ALT, which are the liver enzymes. अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि हम ये कहते हैं कि हमें right upper quadrant pain हो रहा है, but these deep organs like lung में pneumonia हो रहा होता है तो आपको पेन नहीं होता. अगर आपका लिवर इन्फेक्ट हो रहा है तो ये डीप ऑर्गन्स पेन नहीं करते, लेकिन ये पेन आपको कब करेंगे? ये पेन उस वक्त करेंगे when there is acute inflammation. I keep on telling you again and again, whenever there is acute inflammation, there is a swelling. Whenever there is swelling, edema, there is a stretch of the capsule. So basically जब liver का capsule stretch होता है तो वहां से pain generate होता है. तो patient आपको कहता है कि मुझे अगर किसी को liver है तो उसको पेन हो रहा है. ठीक है, अगर कोई एक एक्यूट में आता है, उसकी नोजिया वोमिटिंग की हिस्ट्री है, तो लिवर एक्सक्लूड होना जरूरी होता है, क्योंकि इससे the derangement of the liver enzyme is strongly associated with the liver pathology. So again, jaundice is the hallmark. All of us know that whenever there is a jaundice, we talk about the liver. अब ये दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लिवर है, सॉरी, कौन से infections हैं which are enterically transmitted and which are the infections which are parentally transmitted. ठीक है, इसको गलत नहीं करना. You if I am taking the exam and I have a opportunity, if somebody doesn't know this, and we are living in part of in the part of the world where the figures given are that 75% of the total carriers of hepatitis B are living in Asia. So it is very important to know कि ये जो दो पॉइंट है, हेपेटाइटिस ए और ई कैसे ट्रांसमिट होता है. हेपेटाइटिस ए और ई ट्रांसमिट होता है एंटेरिकली. ठीक है, जब हम कहते हैं कि कोई डिजीज एंटेरिकली ट्रांसमिट हो रही है, कोई डिजीज एंटेरिकली ट्रांसमिट हो रही है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है इसकी फीको ओरल ट्रांसमिशन. ठीक है, यानी फीको ओरल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको ब्लड नहीं स्क्रीन करना होगा. फीको ओरल ट्रांसमिशन को आपको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा? यू हैव टू the hygiene. Okay, और parentally transmitted viruses कौन से हैं? Parentally transmitted viruses हैं B, C, D और G. When we say parentally transmitted, serum, through blood, through needle stick injuries, through breaks in the mucous membrane, through the needle sticks, etc., and even perinatal during birth. Okay, again इस slide पे दो point important है कि एंटेरिकली ट्रांसमिटेड वायरसेस ए और ई हैं. अगर उसको याद करना हो तो बड़ा आसान है, दो एक्सट्रीम्स हैं ए और ई. और पेरेंटली ट्रांसमिटेड में कौन से हैं? उसके बी, सी, डी और जी. So this is a table. I think we'll do that in the end because it's already 11:44. Okay, hepatitis A. For hepatitis A, one should know that this is a benign self-limited disease. ठीक है, benign क्या चीज होती है? benign की टर्म हम यूजुअली यूज करते हैं ट्यूमर्स में, वो जो आप कुछ नहीं कहते, आप थोड़ा सा सपोर्टिव मेजर देंगे, डिजीज को तुरंत खत्म हो जाएगी. इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 6 weeks. हेपेटाइटिस ए वायरीमिया इज ट्रांसिएंट. ठीक है, अब ये एक डिस्कशन होती है कि हेपेटाइटिस ए का वायरस ब्लड में तो आता है, तो क्या ब्लड प्रोडक्ट्स को स्क्रीन करने की जरूरत है फॉर हेपेटाइटिस ए? देयर इज नो नीड टू स्क्रीन, क्योंकि जब वो ब्लड में आता है उसका बहुत ट्रांसिएंट पीरियड होता है, यानी वो वायरस को तब तक ब्लड में फॉर सम और अदर रीजन वहां से एस्केप हो जाता है और सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए देयर इज नो नीड टू स्क्रीन द डोनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स. तो लेकिन बेसिकली अब अच्छा, अब इस तरह के ग्राफ हैं जो we'll be doing with these are the graphs which we'll be doing
in hepatitis A, B और C. ठीक है, अब इन ग्राफ्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये इसकी वर्टिकल लाइन. ओके, सो नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड में जो इसके वायरस के पार्टिकल्स हैं, they start coming in the they start excreting through the stool. ठीक है, तो जो फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर में वो आना शुरू हो जाते हैं, and they are able to transmit the disease to the fecal matter. But as the disease progress, what happens, अगर आप यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे अभी हमारे पास सिम्टम्स आए हैं, लेकिन सिम्टम आने से पहले ही हमारे पास सिम्टम्स आए हैं, लेकिन सिम्टम आने से पहले ही इसके सिम्टम आने से पहले ही फीकल मैटर में वायरस के पार्टिकल्स ट्रांसमिट होना शुरू हो जाते हैं. इसलिए क्या होता है कि वो पर्सन जो अभी सिम्टोमेटिक भी नहीं हुआ होता, that person is able to transmit the virus to the other people. But लेकिन और डिजीज जब active disease होती है, you can see over here the symptoms are there. You can see over here the symptoms are there, and IgM level is rising. So IgM लेवल यहाँ पे आप देखिए, IgM लेवल जो है, जैसे ही सीरम सिम्टम्स आए, IgM लेवल राइज हो गया. तो अगर मुझे किसी को हेपेटाइटिस ए डायग्नोज करना है, तो मैं क्या कराऊंगी, मैं IgM के लेवल्स कराऊंगी. एक्टिव फेज में दो एंटीबॉडीज होती है बॉडी में, IgM और IgG. एक्यूट फेज में कौन सी सबसे पहले एंटीबॉडी आती है, इट इज IgM. IgM आना शुरू हो जाती है when the symptoms are there. So what happens when the symptoms are there, IgM level comes and we can detect IgM level, and the patient can be detected as case of hepatitis A. और जब patient recover करने लगता है, as the patient start recovering, what happens, the IgG also enters. The IgG also enters in the blood. But in the labs we don't have the facility to measure IgG. So what we do is that we take the level of the total antibody, and as the disease, and if the total antibody is rising and IgM is declining, the rise in IgG indicates that the antibody has been acquired by the body, and we are coming out of that infection. So coming to hepatitis B, for hepatitis B, the most discussion will be about hepatitis B. It is a hepatinovirus. This is a DNA virus, and most of the other viruses are RNA viruses. So in the central part of it is called the DANE particle. Then there are different antigens. We quickly have to go through all these antigens because the natural course of disease of hepatitis B is basically determined by the level of these antigens in the blood. So basically there is hepatitis B virus antigen or hepatitis B surface antigen. The clinical features are the incubation period is 2 to 5 months. Okay, and there is insidious onset of the symptoms, but as we have already discussed, that it can cause acute hepatitis, it can cause chronic hepatitis. Infection is parentally transmitted, that is the virus replicates in the liver as well as excess and then keeps on shedding. So the viremia is prolonged, so the blood of the infected individual is highly infectious. Hepatitis B की transmission कैसे होती है? This is a list by which the hepatitis B virus can be transmitted, which you already have gone through different times.
लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात समझनी क्या जरूरी है कि वो एरियाज जहाँ पे there is a pandemic of hepatitis B, the most common route of transmission is perinatal transmission, or which is also called vertical transmission. Okay, I again repeat that this is a list by which the hepatitis B can be transmitted from one person to another, but किस एरिया में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होगा, तो वो एरियाज जो पेंडेमिक है, लाइक फ्यू एरियाज ऑफ अफ्रीका where there is pandemic, the most common route of transmission is perinatal or vertical transmission. Then the horizontal transmission is the when the mother is infected and she's taking care of the child by breastfeeding, or the child is very small, so by little breaches in the mucosa, in the skin, that the serum is transmitted to those children, so that is called horizontal transmission or close personal contact transmission. Okay, this usually occurs again in those areas where the hepatitis B is pretty common. Okay, तो again ये list है कि अगर कोई breast feeding कर रहा है तो how much is the chance that the child can get infected? So basically that is the horizontal transmission. ठीक है कि अगर mucosa में breach है तो वहाँ से there is a chance to transmit the virus. And one thing is very important, that the chance of turning disease into the chance of turning disease into chronicity is the chance of turning disease into chronicity is more if a person get infection in childhood. ठीक है, जितनी young age में infection acquire करेगा उतना ही increased risk है to going in. Okay, so basically in this slide we have discussed three things, but what is important, pandemic areas and vertical transmission is common. Then less where the disease is less prevalent, horizontal transmission, and these others mode of transmission are more. So it is very important to understand the mode of transmission कि क्या mode of transmission है. ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं अफ्रीका की पॉपुलेशन देख रहे हैं, किसी पेंडेमिक एरिया की देख रहे हैं, तो वहाँ आपने किस फैक्टर को एम्फसाइज करने हैं और अपने एरिया में आपने किस फैक्टर को एम्फसाइज करना है. And the second point is that earlier the disease is acquired, jitni young age pe disease acquire hogi, there is more chance of chronicity. Okay, so basically this is taken from Robbins, and what is important to see over here is हेपेटाइटिस बी क्या क्या कर सकता है. हेपेटाइटिस बी एक्यूट इन्फेक्शन कर सकता है, सब क्लिनिकल डिजीज कर सकता है, परमानेंट हेपेटाइटिस कैन बी chronic hepatitis. For what is important to note over here are the numbers. क्या चीज important है, numbers important है. एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ 70% में सब क्लिनिकल डिजीज होती है. ठीक है, सब क्लिनिकल डिजीज को सब क्लिनिकल डिजीज के लिए या उसको ये सब क्लिनिकल डिजीज का क्या मतलब है कि वो एसिम्प्टोमेटिक एरियाज 70%, 70% are asymptomatic areas. Ecteric phase, what does the word ecteric phase means? Ecteric phase means developing jaundice. Only 30% develop jaundice. Then 90%, okay, more than 90%, 90% is a big figure. They go into recovery. Permanent hepatitis is less than 0.5%. And then we are worried about is chronic hepatitis, which is in less than 5% of the cases. Sorry, less than 5% of the cases. So basically it is less than 5% of the cases which we are worried about. Is ये जो chronic hepatitis होता है in less than 5% of the cases. In less than 5% of the cases, if chronic hepatitis develop, उसके बाद उसका further क्या है, उसमें less than 2% में recovery हो जाती है. Healthy carriers होते हैं 30% or more, and then cirrhosis develop in 20%, and then there are few which develop hepatocellular carcinoma. Okay, so recovery is again healthy carriers बन जाते हैं और cirrhosis. ठीक है, so this is basically how the cycle of hepatitis B goes. So basically इससे हमें क्या पता चला, इससे कि बहुत ही कम percentage है, which is less than 5%, which acquire chronic hepatitis. Basically the problem is only with these chronic hepatitis patient. Otherwise acute hepatitis में
large majority recovers by themselves. क्रॉनिक हेपेटाइटिस के पेशेंट्स क्यों प्रॉब्लमेटिक होते हैं? इसलिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं कि ये पेशेंट्स हैं जिनमें सिरोसिस डेवलप हो जाता है. सिरोसिस, व्हाट सिरोसिस इज? सिरोसिस बेसिकली फाइब्रोसिस ऑफ लिवर, जिसमें लिवर पेरेन्काइमा डैमेज हो जाता है फॉरएवर. और and then there are very few which develop hepatocellular carcinoma. तो बेसिकली ये दो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको अवॉइड करने के लिए द एंटायर डिस्कशन है. ओके, ये सिंपली स्ट्रक्चर है किस चीज का? दिस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इज ऑफ हेपेटाइटिस बी. इसको सिर्फ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि ये इसका सेंट्रल डीएनए है, ये इसका कोर एंटीजन है, so ये इसका एक्स एंटीजन है. so to understand and to diagnose the liver, the different markers of hepatitis B, we need to understand that liver has multiple antigens. ठीक है, पहले ये just schematic representation is if you look at the figure 1, फिगर 1 में क्या है? एंटीजन है. एंटीजन के साथ एक एंटीबॉडी आके अटैच हुई रेड कलर की. एंड व्हाट दिस एंटीबॉडी इज मोस्ट लाइकली, if I am taking the live class, I must be asking the question कि पहली एंटीबॉडी कौन सी होगी? हमें पता है कौन सी होगी, IgM होगी. ठीक है, और दूसरी एंटीबॉडी कौन सी होगी? IgG होगी. IgG क्या इंडिकेट करती है? IgG इंडिकेट करती है कि the patient is coming out of infection and body has won the war against virus. ठीक है, और उसके बाद फोर्थ में क्या हो गया है कि there is a recovery phase and that it is taken over by IgG. ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं क्योंकि आगे हम जितनी बात करेंगे about the life cycle, about the surface markers of hepatitis B which are used to diagnose hepatitis B, this is all about the interaction between antigen and antibody. ठीक है, फिगर 1 में क्या हो रहा है? फिगर 1 में there is antigen. फिगर 2 में the antibody has come. which antibody? IgM. ये याद रखना है. ठीक है, and then which is the second antibody to come? It is IgG, which is yellow in color. And in the figure 4, the patient has won the war against virus. Okay, so this is the most difficult part of the lecture, to understand these two graphs. What is the difference between the figure A and the figure A and figure B? ठीक है, figure A है acute infection with resolution, and figure B क्या है? Progression to chronic infection. I again repeat, this figure A is this is taken from Robbins. There's no problem, you can find it there, but understanding is really difficult, so please concentrate. This is the most difficult side of lecture. ठीक है, so फिगर ए में क्या हो रहा है? एक्यूट इन्फेक्शन है जिसमें रेजोल्यूशन हो रही है, पेशेंट इज गेटिंग आउट ऑफ इन्फेक्शन. फिगर बी में क्या हो रहा है? देयर इज प्रोग्रेशन. ओके, सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, this is the incubation period. Okay, if you recall, the incubation period is 4 to 26 weeks. Okay, incubation period is the period where patient has acquired the infection but has not yet produced the symptoms and is asymptomatic. So जब वो symptomatic होता है, symptomatic क्या है? हमने liver disease से पढ़ा, the jaundice is the hallmark of the liver disease. Okay, so the patient has developed nausea, vomiting and jaundice. अगर मैं उसके लैब्स करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आएंगे? एलिवेटेड सीरम ट्रांसअमाइनेजेस. ये एलिवेटेड सीरम ट्रांसअमाइनेजेस क्या है? दीस आर ALT एंड AST. सो ये जो लिवर एंजाइम्स हैं ये हमारे पास रेज्ड आएंगे. ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि इसके लिवर एंजाइम्स तो रेज्ड है, लेकिन पर्टिकुलरली ये कौन सा इसको इन्फेक्शन हो रहा है, और इफ आई एम सस्पेक्टिंग हेपेटाइटिस बी, देन द फर्स्ट एंटीजन to come in the serum in case of hepatitis B after the patient is symptomatic is hepatitis B surface antigen. Okay, the hepatitis B surface antigen, please keep it in mind that hepatitis B surface antigen to be detected in serum after the patient is being symptomatic, and this is followed by hepatitis B virus DNA and then hepatitis B E antigen. So these three antigens, ठीक है, hepatitis B surface antigen, BE antigen and hepatitis B virus DNA. So these three are the antigens which are the antigens detected in the serum of uh,
infected patient, and if you happens in the infections where the resolution does not take place, that these antigens keep on increasing. Okay, so again coming back to here, this is pretty complicated and I understand that it's difficult to understand. Okay, so कौन से antigens आएंगे सबसे पहले? ये hepatitis B surface antigen followed by B virus DNA and then B antigen. उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले जो चीज आपके पास सीरम में डिटेक्ट होनी शुरू होती है, जैसे जैसे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कम होगा, से बॉडी ने रिकवर कर लिया और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कम हो रहा है, तो फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी डिटेक्टेड इन द सीरम वंस द रिकवरी स्टार्ट्स इज एंटी हेपेटाइटिस बी वायरस और एंटीजन. ठीक है, अगर आपने सिंपली किसी को समझाना हो कि भाई कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन हो गया हेपेटाइटिस बी का, खत्म हो गया, पहला जो यूजुअली लैब्स डिटेक्ट करती है बी सरफेस एंटीजन, और अगर वो देखती है कि एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी आ गई है बॉडी में, इसका मतलब है कि बॉडी हैज रिकवर्ड, हैज कम आउट ऑफ दैट इन्फेक्शन. ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट करो, एक चीज होती है विंडो पीरियड. दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एमसीक्यू वाइवा. ये विंडो पीरियड क्या होता है? विंडो पीरियड वो होता है कि जिसमें सरफेस एंटीजन डिसअपीयर हो जाते हैं लेकिन सरफेस एंटीबॉडी अभी अपीयर नहीं हुई होती सीरम में. एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हिच इज कॉल्ड विंडो पीरियड, what are the which is the antibody which is helpful for detection that this patient has acquired hepatitis B and is coming out of the infection is IgM, anti hepatitis B 4 antibody. I again repeat, window period. What is window period? Window period is the time where some surface antigen have started disappearing from the serum and surface antibody has not yet appeared in the serum, and the antibody which is detected in the window period is anti hepatitis B core antibody. क्योंकि ये core क्या चीज है? ये भी इसका एक एंटीजन है जो हेपेटाइटिस बी के स्ट्रक्चर में होता है, जिसके लिए मैंने आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी तस्वीर दिखाई थी ऑफ हेपेटाइटिस बी. ओके, सो क्या होता है कि एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी इंक्रीज होने लगती है. तो विंडो पीरियड में सबसे पहले ये एंटीजन आते हैं. जब व्हेन बॉडी स्टार्ट रिकवरिंग, तो कौन सी एंटीबॉडी आती है? एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी. This anti-hepatitis B core antibody IgM आती है. Then IgM also started declining, और IgM जब decline होगी तो कौन सी antibody increase होगी? IgM is followed by IgG. ठीक है, IgM acute infection को show करता है और IgG show करता है कि chronic infection से body is coming out of the infection. So this IgM is later replaced by the IgG core antibody. यहाँ पे अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि कोर एंटीबॉडी हम यहाँ पे टोटल चेक कर रहे हैं. इफ यू लुक ओवर हियर वी आर checking total anti-hepatitis B core and not IgG, because again, like in hepatitis A, IgG. So what they do, they check total anti-hepatitis B core antibody. ठीक है, तो IgM हमें पता है कि जब बॉडी रिकवर हो रही है तो IgM कम होगा, और अगर हमारे पास ये टोटल नंबर ज्यादा आ रहा है तो what this total is about IgM plus IgG. so अगर टोटल ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब है कि IgG ज्यादा हो रहा है. ठीक है, तो जब बॉडी एक्यूट इन्फेक्शन से बाहर आ रही है तो IgM rise हुआ, then IgM start falling, but there is rise of the total anti-hepatitis B core and it is in plateau. Sorry, okay, it keeps on increasing. At the same time, when body is coming out of infection, also anti-hepatitis B antigen rises and then it falls. ठीक है, so ये the elevation of the anti-hepatitis B antigen also show that the body is coming out of infection, and then the most reliable marker that the body has come out of the acute infection and won the war against virus is anti-hepatitis B surface antibody. Now simply compare this to this patient who has progression to the chronic infection. What we can see over here, this is rise in the serum transaminases with the patient being symptomatic, and these antigens, that is hepatitis B surface antigen, hepatitis B virus DNA, hepatitis E antigen, all these antigens are continuously rising. Sorry, there is problem with my internet connection. So
you can see over here, the bars are going on like this. If you compare it with this, what you can see over here, that the bars have stopped prolonging. Here the bars are prolonging. What does these prolonged bars indicate? These prolonged bars indicate that the virus is replicating. Virus का number increase हो रहा है, उसके antigens rise हो रहे हैं. अब now what we can see, there is IgM anti hepatitis B core antigen. ठीक है, anti hepatitis B core antigen increase हुई और फिर उसके बाद ये कम होना शुरू हो गई, but there is no sharp rise in the total anti hepatitis B core. It means it is not rising. And what you can see over here in the dotted line, that anti hepatitis B antigen has also is in dots. यानी इसका कोई levels में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, because sometimes it is being asked that if there is a rise of this anti-hepatitis B E antigen, it means that the acute infection has occurred and now it is the patient is recovering. But what we can see over here in the chronic, it is in the dotted form. Dotted forms, there is hardly any antibodies to BE antigen. That is why the BE antigen in this bar is increasing. And what you can see, that this total anti-hepatitis B core antibody is also much less than this one. Okay, so basically, again coming, hepatitis B is a global problem, and what is important that the patient can present with acute hepatitis, can have chronic hepatitis, and then there are these and antibodies. We have started an almost entire by yourself. Then if you have problem, we can in any lecture we can again repeat it, because I know it's very difficult to understand, but I can repeat it anytime. We'll be here for the whole month, almost every Wednesday, Thursday. I think I'll take the your feedback at the end, but I think I'm trying to explain. If you have problem, we can do that again. Okay, so quickly, basically, this is the description of the same. इससे बहुत emphasis इसलिए क्योंकि hepatitis B की antigens किसी न किसी form में बड़ी labs में available हैं, so you need to have understanding of the disease progression. So hepatitis B surface antigen indicates that the virus replication is occurring in liver. E antigen is the high levels of viral replication. Core antigen is not found in the blood because we don't have the assays to detect it. Surface antibody का क्या मतलब होता है कि अगर surface antibody है, इसका मतलब है कि the patient has acquired the immunity. तो E antibody है, ये indicate करती है low infectivity. ठीक है, infection हुआ है, वो ठीक हो गया है, लेकिन पेशेंट अभी उसकी लो इन्फेक्टिविटी है, वो कैरियर है. तो अगर मुझसे एक एंटीबॉडी पूछे कि अगर कौन सी सबसे रिलायबल होगी कि पता चले कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, तो दैट इज द सरफेस एंटीबॉडी. Then it is core IgM, core IgG. This we have already discussed. Please go through these slides, and if any problem we can. Passive immunity. ठीक है, passive immunity क्या चीज होती है? Hepatitis passive immunity का मतलब ये होता है कि जिसको कि हम formed antibodies inject कर रहे हैं into the patient. Formed antibodies के लोगों को इंजेक्ट की जाती है. इसी तरह जैसे आप कहते हैं कि जो कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप उनकी एंटीबॉडीज ले रहे हैं और इन्फेक्टेड पेशेंट्स को इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब एक एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि आपकी बॉडी, मुझे इन्फेक्शन हुआ, मेरी बॉडी ने उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिएक्ट किया एंड माय ओन बॉडी हैज प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज. एक सिचुएशन ये होती है कि मैं किसी और की एंटीबॉडीज लेके मेरे सीरम में या मेरी बॉडी में इंजेक्ट की जाएगी. ठीक है, अब what are the situations in which the passive antibodies should be injected into the body? ठीक है, वो क्या होता है कि अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है, से कोई फ्लेबोटमिस्ट है, वो ब्लड ले रहा था और उसको नीडल प्रिक इंजरी हुई है ऑफ हेपेटाइटिस बी पेशेंट जिसकी सरफेस एंटीजन है, तो उसका ये राइट है कि ही शुड गेट द passive antibodies. ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि अब एंटीजन की बॉडी में आ गया है, तो उसको जरूरत होती है इस चीज की कि आप एंटीबॉडीज इसके सीरम में इंजेक्ट की जाए. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड पैसिव एंटीबॉडी. यानी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो अगर आप किसी के उसमें इंजेक्ट, ठीक है, किन लोगों को करते हैं, उनको यूजुअली जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जिनको नीडल स्टिक इंजरीज होती है, ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है
जो आपकी कह रहे हैं कि प्लाज्मा फेरेसिस वाली ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं टू द कोरोना पेशेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली फाउंड एंटीबॉडीज दूसरे पेशेंट्स की इंजेक्ट की जा रही है टू द इन्फेक्टेड पर्सन। Okay, so hepatitis B immune globulin should be administered in non-immune individuals following single episode to hepatitis B infected blood, for example, needle stick injuries and healthcare workers. So active immunization means what we have required about hepatitis B is that the vaccine is available. Vaccine for hepatitis शॉर्ट हो गया। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी नहीं की जाती। एक दफा इसकी एग्जांपल है जब वहाँ पे उन्होंने इंजेक्ट की थी वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ए। अदरवाइज हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज अ बेनाइन सेल्फ लिमिटेड डिजीज, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के क्योंकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए जैसे यू बीइंग मेडिकल स्टूडेंट्स आप लोगों की भी पहले चेक हुई होंगी और मोस्ट लाइकली आपको भी वैक्सीनेट किया गया होगा। तो बेसिक इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि एंटीजन दिया जाता है बॉडी को एंड देन द बॉडी रिस्पॉन्ड टू इट बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि ऑलरेडी formed antibodies are injected into the blood. So active immunization, the two types of vaccine are quickly go through the sites that the and essentially both types of vaccines are safe and effective and both are the form of active immunization. 3 डोजेस में एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर की जाती है। प्रोटेक्टिव लेवल इज 95%। फिर हम एंटीबॉडीज की लेवल चेक करते हैं और मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी कि हम इसमें कौन से एंटीबॉडी की लेवल चेक करेंगे to check that the person is immunized. Okay, I'll upload the assignment and the one question will be कि अगर कोई पेशेंट को मैं अगर जैसे आप लोग हैं और या मैं हूँ और मुझे इम्यूनाइज किया गया है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, तो मेरे सीरम में क्या एविडेंस होगा that I have been immunized. Yeah, now WHO has recommended that there should be universal immunization 3 doses में दें और usually बच्चों को within 4 hours they should be administered the hepatitis B immunization. क्योंकि मैंने आपको 2 पॉइंट बताए कि एक के जो कैरियर्स है मदर उनसे ट्रांसमिट हो सकता है और अगर हेपेटाइटिस बी होता है इन द यंग एज then there's a more chance to get chronic hepatitis. Okay, so if a child of 5 to 10 years or even less than 5 years get infection, there is a more chance to get into the chronic state. So WHO has recommended that every newborn within 24 hours should get the first dose of hepatitis B vaccine, and in Pakistan it's also being practiced now. और कौन से लोग who should got the vaccination? Healthcare workers, sexual partners of chronic carriers probably हम next lecture में discuss करेंगे, infants of hepatitis B virus carrier mothers. So the coming to अच्छा it for it is 12:14, but I just take 5 to 10 more minutes because we have started late. Definitely it was a problem with my side, but it's just 5 to 10 minutes more. So hepatitis C is the other name for the hepatitis C is serum hepatitis. Serum hepatitis क्यों कहते हैं? Serum hepatitis इसलिए कहते हैं कि there is a more chance that this virus is transmitted through blood products, far more chance than hepatitis B. Okay, I again repeat, the other name for hepatitis B, C is the serum hepatitis. Why it is called serum hepatitis? Because acquiring this infection by the transmission of blood or blood products is far more as compared to hepatitis B. Another thing which is very important, which I also discussed in figure, that if a person is having hepatitis C, there is a far more chance that he get a chronic state as compared to hepatitis B. We talk about a lot about hepatitis B because there is a vaccine which is there for hepatitis B, but unfortunately for hepatitis C, we don't have any vaccine.
but this is more lethal than hepatitis B. Why? Because the percentage of patients acquiring chronic hepatitis is far more as compared to hepatitis B. And again, it also causes liver cancer. Liver cancer पे जब cancer पे बात करेंगे उससे करेंगे बहुत सारे जो viruses chronic hepatitis का आके all of them can cause liver cancer. ठीक है? This is also called transfusion associated virus, which I have already told you. तोबा वायरस फैमिली से जो हमने शुरू में टेबल देखा था ना जिसको मैंने स्किप कर दिया फॉर सेक ऑफ टाइम at some point we'll again discuss that, or we can accept the hepatitis B. ठीक है, ये भी याद कर लेंगे hepatitis B is a DNA virus, others are RNA viruses. Okay. So incubation period is 6 to 8 weeks. Incubation period is very important. Incubation period क्या होता है कि जिससे patient has acquired the infection, has ability to transfer but has not yet become symptomatic. ठीक है, तो कर लिया होता है वो ट्रांसमिट कर सकता है लेकिन patient is not symptomatic, so but nobody knows that he has infection. Causes a milder form of acute hepatitis, then does hepatitis B. 50% of the individuals develop chronic infection following exposure. Complications क्या हो सकती है? Chronic liver disease or hepatocellular carcinoma. Okay, so this figure is 50%, which is far more than hepatitis B. It is transmitted by blood transfusions, blood products, organ donation, intravenous drug abusers. ठीक है, जो drug abusers होते हैं इसमें most common